Jai Hind to everyone. Myself, Dr. Anuradha Talu from CSA department. In the lecture series of Artificial Intelligence, today we will be going to discuss regarding the searching algorithms. You know very well, for the problem formulations, from the identification of the solutions for the problem, we basically use these searching algorithms. You have already read the searching algorithms in data structures in DAO also, but there are some more algorithms which are basically used in the artificial intelligence. So today we'll explore about that part. So what is searching algorithms in AI? Definitely, AI is basically the replication of human intelligence. You know very well, AI, the artificial intelligence. It's the intelligence by which is created artificially. It is just a replica of the human intelligence. They want, what the people want, what the scientists want is that they want to act the machines just like a human. So they are creating certain more machines, certain more environments they are trying to create, that by which everything can be managed by the humans, everything can be dealt by the humans, and of course it get translated completely to the artificial impact. So that is what is mentioned here. AI is basically the replication of human intelligence through computer systems or machines. It is done through the process of acquisition of knowledge or information and the addition of rules that are used by the information. Of course, it's a machine, so we have to tell them completely that how they have to step forward, how they have to step backward, how they have to do move on. So for every movement, we should have a set of rules. We have to declare the rules by which they can have the certain steps that should be taken by them, isn't it? Because it's a machine, it's a dumb model, it's just a blank box, it is just like a black box. So we have to feed certain rules, and through that rules, through certain training given to those rules, definitely the machine can act humanly, isn't it? So you know very well about that thing, that the AI is basically based on the Turing test, the Alan Turing, who has given the basic concept of learning just like a child learning, that a small child is crawling, a small child is able to grasp the environment near to them. Definitely, if it is the cat is coming again and again in front of that child, he can able to recognize, he can able to recall that it's a cat, only just by recognition, only by seeing that again and again pictures of the cat, or again and again visualizing that cat, that the child can easily visualize. Same thing we want in the AI also. It's a child model, and we are training that model, we are giving certain set of rules through which definitely we can have the movement of the machines. So that is what is mentioned here, the addition of rules that are used by the information, that is learning, of course. Then using these rules to derive conclusions, that is reasoning, and the self-correction. First of all, the basic is the learning part, that is the supervised learning, or it may be in further unsupervised learning, or it may be in the reinforcement learning, isn't it? So supervised learning starts with the basic concept, that is I had already given a child example, definitely, and through that we are giving the rules also. Then with the help of those rules, definitely the machine can able to have certain formulations, it can certain grasp the information from the environment also, from the historical data also, from the current data also, the data we are feeding, we are giving certain instructions. All these conclusions will given up the proper outcome which we are expecting, isn't it? So coming on to the properties of search algorithms, definitely we are moving to the searching algorithm. So you should know what are the properties of the search algorithm, isn't it? So the first property is the completeness. What is completeness? A search algorithm is complete when it returns a solution for any input if at least one solution exists for the particular input. हम तब तक उस एल्गोरिथम को कंप्लीट नहीं मानेंगे जब तक वो मुझे सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती. That is why it is called a complete algorithm, isn't it? अगर वो मुझे solution ही नहीं देगी, I am not able to reach my goal node, I am not able to reach my destination. So how I can say that the algorithm I am using is a complete algorithm? It is not providing me the solution. Simply saying that if I want to traverse from my college to somewhere in Delhi, for example, I am in Ghaziabad and I am moving on to the Janakpuri, my place. So I have to traverse. I'll take the path from maybe I'm traversing my path through the Meerut, or I'm moving through maybe through the Hapur, or I'm going straight forward to Delhi, isn't it? It depends on me from where I'm taking the path. But if the algorithm is not providing me the solution to reach the Janakpuri, so definitely it is a failure algorithm. So I cannot conclude that it's a complete algorithm, isn't it? My problem is to reach the destination, that is Janakpuri, but the algorithm I am using, it is not providing me the proper path, it is not providing me the proper space to reach there itself. So that is why we are in need of a complete algorithm. The property says that, the first property says that the algorithm should be complete enough, isn't it?
The second one is the optimality. It is of course a very much important property. If the solution deduced by the algorithms is the best solution, that is, it has the lowest path cost, then the solution is considered as the optimal solution. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मुझे डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, मुझे जनकपुरी तक पहुंचना है. The algorithm showing me the route is that from the Ghaziabad I have to reach Haridwar, then from Haridwar I am reaching to the Janakpuri. Reverse process. So what will happen is that the cost of the path will get increased, isn't it? It is not providing me the best solution. It is providing me the solution, definitely. It is showing me the route of by traversing through the Meerut, through the Haridwar, and then to reach back to the Janakpuri or to Delhi, isn't it? It is not showing me the best solution. The best solution says that I am having a direct path from Ghaziabad to Delhi, isn't it? I can take a metro. I can simply take a metro from the Vaishali and I can reach to Janakpuri, isn't it? But the algorithm which I am using, for example, it is not showing me the best solution. It is not showing me the accurate solution. So the algorithm should be used, it should be such like that, it should provide the best solution. So that is why it's mentioned here. If the solution deduced by the algorithm is the best solution, it has the lowest path cost, then the solution is considered as the optimal solution. Getting my point, everyone? Good. Next is the time and the space complexity. You know, you are very much aware about that thing. In every algorithm, we have to conclude about the time complexity and the space complexity. It is very much must. ऐसा नहीं होना चाहिए उस algorithm को मैं use करूँ और पता चले वो मुझे 1 month के बाद result दे रही है. It should not be happen like that, na? It is very much acquired. It is very much mandatory to have that the time should be less enough to achieve my result. The space should be less enough to achieve my result. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेमोरी साइज आपका बढ़ता ही जाए, बहुत ज़रा लॉन्ग स्पेस वो एक्वायर करता जाए. प्रॉब्लम छोटी सी है, उस छोटी सी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैं एक बड़ा स्पेस एक्वायर कर रही हूँ, या मैं 1 month ले रही हूँ, और आई एम टेकिंग 1 week. अगर वो 1 घंटे का काम है, मैं 1 week ले रही हूँ. It should not be like that. The algorithm should be such like that. It should have the less time complexity, of course, less space complexity. So that is why it's mentioned here. Time complexity is the time taken by an algorithm to complete its task, isn't it? And the space complexity is the maximum storage space needed during the search operation, isn't it? It should not be complex enough to that. So that is very much mandatory for both the searching algorithms. So, in the category of the searching algorithms of the artificial intelligence, the first category is the uninformed, or we can also say that it's a blind search algorithm. So, what is uninformed search? It does not contain any domain knowledge such as closeness, the location of the goal. मुझे नहीं पता, मैंने आपको बताया कि मुझे यहाँ से जनकपुरी पहुँचना है. मुझे नहीं पता, मुझे आई एम नॉट अवेयर अबाउट कि मुझे कहाँ से जाना है, मुझे मतलब आई एम नॉट हैविंग द क्लैरिटी. मुझे गोल नोट तो पता है, लेकिन कहाँ से वो मुझे लेके जा रहा है मुझे नहीं पता. आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट थिंग. मुझे आई एम नॉट हैविंग अ डोमेन नॉलेज कि वो कौन कौन से एरिया से मुझे ट्रैवर्स करके मुझे लेके जा रहा है. अनइन्फॉर्म्ड मीन्स आई एम नॉट हैविंग द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेयर आई एम मूविंग. I'm having no information. That is why it's a blind search algorithm. Blind search means I'm blindfolded. जहाँ से वो मुझे definitely वो मुझे destination तक तो पहुँचा देगा, but I'm not able to clarity. I'm not having the clarity of that कि जहाँ पर भी मैं पहुँचूंगी, जहाँ मैं पहुँच पा रही हूँ, वो कितनी duration में मुझे पहुँचा रहा है. Isn't it? So uninformed search, we are not having any information. If I talk about a simple picture, मान लीजिए I have to move somewhere. मुझे नहीं पता, मैं मूवमेंट करती जा रही हूँ, मुझे डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, मैं मूव करती ही जा रही हूँ. I can move here also, I can move here also, there also, there also. So that is a random. I'm moving and moving and moving. I'm not having the picture clarity कि मुझे कैसे कैसे कहाँ मूव करना है. Isn't it? It is not having a proper domain knowledge for that part. Isn't it? So that is why we should have the clarity of that how should we are reaching to the domain. So that we'll discuss in later part, but at present we are discussing about the uninformed search, जहाँ पे मेरे पास कोई भी information नहीं है. Yes, definitely it will provide me a solution.
दैट इज वेरी मच नोन टू मी कि वो मुझे सॉल्यूशन जरूर देगा, लेकिन कैसे देगा, किस रास्ते से मुझे पहुंचाएगा, आई एम नॉट हैविंग क्लैरिटी फॉर दैट पार्ट. ओके, इट ऑपरेट्स इन अ ब्रूट फोर्स वे as it only includes information about how to traverse the tree and how to identify leaf and gold nodes, isn't it? वो brute force attack पे काम करेगा, randomly कहीं ना कहीं किसी ना किसी रास्ते को traverse करेगा, move करता जाएगा to reach the goal node, isn't it? हर तरीके के वो प्रोसेस को यूज करके अप्लाई करेगा. ओके, हाँ, आई कैन डू फ्रॉम हेयर ऑल्सो, आई कैन गो फ्रॉम हेयर ऑल्सो, मैं यहाँ से भी जाऊंगा, मैं यहाँ से भी जाऊंगा. अल्टीमेटली इट विल प्रोवाइड मी टू रीच द डेस्टिनेशन. ओके, so uninformed search applies a way in which search tree is searched without any information about the search space, like initial state operators, and test for the goal. So it is called the blind search, isn't it? So definitely it is a search tree which is searched with any of the information about the search space, like initial state operators and test for the goal. मुझे goal पता है, वो operators को start करके it will trying to achieve that goal node. It examines each node of the tree until it achieves the goal node. वही सिंपल सी अगर मैं बात करती हूँ, मैंने कहा हम ट्री की बात करते हैं, डेफिनेटली अगर मुझे यहां पर पहुंचना है, दिस इज माई गोल नोड, दिस इज माई स्टार्टिंग नोड. अगर मुझे इस गोल नोड पर पहुंचना है, हो सकता है कि वो यहां से होके, यहां से होके, यहां से होके, फिर यहां से वो यहां पहुंचे. दिस इज द वन वे टू रीच द गोल नोड. और ये भी हो सकता है कि वो यहां से होके, यहां से होके, यहां से होके, यहां से पहुंचे वो गोल नोड. दिस इज द वन, दिस इज द टू, और इट में डायरेक्टली ट्राइवर्स एंड रीच हियर इटसेल्फ. So there are number of paths to reach there itself, isn't it? गोल नोड तक तो पहुंचा देगा, लेकिन कहां से पहुंचाएगा उसे नहीं पता. वो ब्रूट फोर्स अटैक लगा रहा है, वो इधर से भी जाएगा, वो इधर से भी जाएगा, हर तरफ से वो जाएगा टू रीचिंग टू द डेस्टिनेशन पॉइंट. The one more category of the searching algorithm is the informed search. In detail, we will talk about in the next lecture series. But a little bit overview I'm giving about the informed search is that it uses the domain knowledge. आप उसकी जो इन्फॉर्म्ड सर्च है, जिसको हम हेरिस्टिक सर्च भी कहते हैं, उसके पास आपके डोमेन की नॉलेज है और उस डोमेन नॉलेज को वो एक्वायर कर, उसके बाद सर्टेन इन्फॉर्मेशन, सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन इट इज हैविंग. सो यूजिंग दैट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन इट कैन इजिली give you back the revert back the responses. Okay, in an informed search, problem formulation is available which can guide the search. Of course, मैंने कहा problem formulation की clarity है, क्या क्या मेरी problem है, क्या, of course the problem formulation clarity is very much clear. I had discussed in the previous lecture series also. Simply I am giving you one more example for that. अगर मुझे अपने class के students को identify करना है, which are the strong students, which are the weak students, for that category I'll collect the data of my class. I'll collect the name, I'll collect the roll number, I'll collect the father's name, the mother's name, the percentage of the previous semesters, or I may collect the information of the 10th standard or the 12th standard to know which student is in a weak category or which student is in the category of a good student. Isn't it? अगर मैं इन information के साथ साथ I can take certain more information also कि what does his father do, what does his mother do, what are its hobbies, और उनको social media platforms में कहाँ is Insta available or not, Facebook or not. All these categories are also taken for my problem formulation. But is it beneficial for me? No. Definitely. My problem statement states that I just want to identify the weak student of my class. So for that part, I only need the roll number, the name, and definitely the percentage of the previous semester. That is sufficient for me to identify the weak student. Instead of getting the collection of the data for the father, what his father has been doing, what his mother has been doing, what are its social activities, I don't need that. Isn't it? So problem formulation should have the clarity that what is the problem you are having. You should have the clarity of the domain also. What parameters I am taking for my formulation, for getting my solution. Isn't it? Getting my point. So informed search is also called the heuristic search. Heuristic search means simply saying, अगर मैं बात करती हूँ, heuristic search का मतलब ये होता है एक guess लगाना कि अगर मुझे यहाँ, जैसे अभी मैंने आपको example दिया था कि अगर मुझे यहाँ से जनकपुरी जाना है, from गाजियाबाद to जनकपुरी, so I should have the path cost कि मुझे कितना time लगेगा वहां से वहां तक पहुंचने का. I should have the certain clarity कि मुझे 1 घंटा लगता है या 2 घंटे लगते हैं या 2.5 घंटा लगता है या 3 घंटा लगता है. It may possible that I should have a certain clarity of that. एक guess मैं लगा रही हूँ कि हाँ मुझे यहाँ से वहां पहुंचने के लिए इतना time लग सकता है. That is basically the heuristic search. You're getting my point? In more detail, we will discuss in later lecture series. So further it is saying that a heuristic is a way which might not always be guaranteed for the best solution, but guaranteed
to find a good solution in a reasonable time. हो सकता है जो रास्ता वो मुझे बता रहा है वो मुझे डेफिनेटली एक बेस्ट सॉल्यूशन नहीं हो सकता कि वो ना प्रोवाइड करे, लेकिन एक गुड सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड देगा एक रीजनेबल टाइम में। आपको एक टाइम स्लॉट एक फिक्स कर दे कि हाँ आप इतने ड्यूरेशन में आप पहुंचेंगे, वो एक बेस्ट सॉल्यूशन आपको मे बी पॉसिबल मुझे बेस्ट सॉल्यूशन कहीं और रास्ते से मिल जाता है, लेकिन वो मुझे गुड सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेगा। Fine. So informed search can solve much complex problem which could not be solved in another way. Isn't it? Informed search एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डील करता है। अगर मैं इस टाइम थोड़ा सा डिटेलिंग में अगर इसके जाती हूँ, the exponential time problems can be solved by the informed search algorithms. Okay, the NP problems, you have heard about the NP problems. The NP problems can be solved by the informed search. That we will discuss in detail in further lecture series. So now coming on to the categories of the search algorithm, the two categories basically of the AI is having the uninformed and the blind search and the informed search. One more is the local search also, which is your hill climbing algorithm, and one more category that is the adversarial search or the game playing algorithms that we will discuss in later about that thing. But the major categories of the AI algorithm belongs to these two categories, that is the uninformed search, which is also called the blind search, and the informed search, that is also called the heuristic search. So in this lecture we will discuss about this uninformed blind search. Okay. So in an uninformed search, we have to study all these algorithms. The first one is the breadth first search. The second one is the uniform cost search. The third one is the depth first search. The next is the depth limited search. The next is the iterative deepening depth first search. And next is the bi-directional search. So starting with the first one, that is the breadth first search. The breadth first search is the most common search strategy for traversing a tree or a graph. डेफिनेटली BFS क्या है, एक बहुत ही कॉमन स्ट्रैटेजी है जो आपकी ट्री या ग्राफ पर हम अप्लाई करते हैं फॉर द सर्चिंग ऑफ माय गोल नोड. द एल्गोरिथम सर्च ब्रेथ वाइज इन अ ट्री और अ ग्राफ, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ ब्रेथ फर्स्ट सर्च, क्योंकि वो ब्रेथ वाइज काम करता है ट्री और ग्राफ के अंदर, इसीलिए इसको हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च कहते हैं. यू विल हैव द मोर क्लैरिटी विद द एग्जांपल आई एम डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट कमिंग PPT. So further about the BFS algorithm, it starts searching from the root node to the tree and expands all the successor node at the current level before moving to the nodes of the next level. वो एक करके आपको रूट नोड से वो काम करना शुरू करेगा, अपने सक्सेसर नोड्स के पास जाएगा, सक्सेसर नोड से ट्राइवर्स होते हुए वो कोशिश करेगा आपकी गोल नोड तक पहुंचने की. The BFS algorithm is an example of a general graph search algorithm which is implemented using a FIFO-Q data structure. What is FIFO? Definitely it is फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वही बाहर जाएगा. सो इट इज फॉलोइंग अ सिंपल पैटर्न ऑफ FIFO डेटा स्ट्रक्चर. ओके बेटा. एडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं, डेफिनेटली BFS विल प्रोवाइड अ सॉल्यूशन इफ एनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट. अगर आपके उस ट्री या ग्राफ में अगर आपकी गोल नोड है तो डेफिनेटली वो पहुंचेगा. अगर आपके 100 नोड्स का ग्राफ है, वो जब ट्राइवर्स करेगा आपकी ट्री के अंदर, डेफिनेटली इट विल रीच टू द एंड ऑफ द गोल नोड. जहां पर भी गोल नोड होगी कभी ना कभी जरूर पहुंचेगा. लेकिन मैंने वो कहा, वही बताया आपको पहले प्रीवियस में कि अनइन्फॉर्म्ड सर्च है, ब्रूट फोर्स है, तो डेफिनेटली वो फॉलो अप करते करते वो रैंडमली वहां तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा. If there are more than one solutions for a given problem, then BFS will provide the minimum solution which require the least number of steps, isn't it? So definitely it will try to provide the minimum solution, or कोशिश वो करे which require at least the least number of search. Okay. Disadvantage की मैं बात करती हूँ, definitely it requires a lots of memory since each level of the tree must be saved in the memory to expand the next level. क्योंकि मैंने कहा अगर 100 नोड्स का ग्राफ है और उसको पूरे ट्री को अगर ट्राइवर्स करना पड़ रहा है तो definitely memory will be taken by the more. It may be 100, it may be 1000, it may be in lakhs. The tree can be in a very very vast form. So definitely memory acquiring, क्योंकि वो हर breath को breath wise breath वो searching कर रहा है, तो memory आपकी capturing भी बहुत ज्यादा होती जाएगी. BFS needs lots of time if the solution is far away from the root node. पता चले जो स्टार्टिंग नोड है और जहां आपका ट्री खत्म हो रहा है बिल्कुल लास्ट एंड तक, तब आपके जाके आपको गोल नोड मिल रही है. सो इट मे बी पॉसिबल, इट विल टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. ओके. तो BFS एल्गोरिथम की हम बात करते हैं. The implementation puts each vertex of the graph into one of the two categories. The first one is the visited and the second one is the not visited. इन दो कैटेगरीज में हम इनको रख के चलते हैं. The purpose of the algorithm is to mark each vertex as visited while avoiding cycles. हम visited में रखेंगे और कोशिश हम ये करते हैं कि हम cycles को ना बनाएं. So the algorithm says that start by putting any one of the graph vertices at the back of the queue.
हमने स्टार्ट करा एक वर्टेक्स के साथ, यानी हम स्टार्टिंग नोड से हम स्टार्ट कर रहे हैं. टेक द फ्रंट आइटम ऑफ द क्यू एंड एड इट टू द विजिटेड लिस्ट. Create a list of the vertex adjacent nodes. Add the ones which are not in the visited list of the back of the queue. Keep repeating steps 2 and 3 until the queue is empty. The graph might have two different disconnected parts. So to make sure that we cover every vertex, we can also run the BFS algorithm on every node. So one by one moving on. Definitely हमने initial node से हमने start करा, हमने front item को queue में put करा, visited list में हमने उसको डाला. उसके बाद जब मैंने उसको queue से बाहर निकाला, definitely जो उसके next की जो आपके adjacent nodes थी वो वहाँ पे present है, वहाँ से वो move forward होगी. Definitely वो move करेगा ऐसे, आपका तब तक वो चलता रहेगा, आपकी nodes से वो traverse होते चलेंगे जब तक कि वो empty नहीं हो जाती. ठीक है, you will have the more clarity of this algorithm by seeing the example of the BFS. So that is a basic simple example of BFS. You can have the easily clarity of that. I have taken a very small graph by which you can have the complete clarity. अभी छोटा ग्राफ है, आप चाहे तो 100 नोड्स का भी ग्राफ लेंगे तभी वो इसी मेथड से ही काम करेगा. ओके, so we are having a graph of 4 nodes, in fact 5 nodes, 0 1 2 3 0 1 2 3 4. आपके पास सिर्फ 4 नोड्स हैं, 4 तक आपके पास नोड्स हैं. तो मैंने आपको कहा आपके पास दो चीजें रहती है, एक रहती है विजिटेड, एक रहती है आपकी नॉट विजिटेड. ठीक है, हम विजिटेड की बात करते हैं. मैंने स्टार्ट करा विजिटेड पार्ट से, मेरे पास 0 है, आई एम हैविंग अ 0 पार्ट. मैं 0 पर मैं गई. उसके बाद मुझे पता 0 से मेरे पास जो नेक्स्ट लेवल मेरे पास जो पड़ा है ब्रेथ वाइज मेरे पास जो डेटा है दैट इज 1 2 एंड 3. तो मेरे पास जो नेक्स्ट क्यू में ये तीनों के तीनों प्रेजेंट रहेंगे इन सीक्वेंस वाइज. यानी यहां से मैं यहां पर गई, 1 2 एंड 3 मेरे पास यहाँ पर आ गए. डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास 1 आपका यहाँ पर आ गया, 1 मेरा यहाँ आ गया, बचे मेरे पास 2 एंड 3 जो मेरे पास अभी क्यू में रहेंगे. फिर मेरा 2 यहाँ पर आ गया, आई मूव ऑन टू द 2 पार्ट, बचा मेरे पास 3. उसके बाद 3 के बाद मुझे पता है मैं यहाँ से यहाँ पर आई, इसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगी यहाँ पे. तो डेफिनेटली मेरे पास क्यू में मेरे पास नेक्स्ट जो मेरे पास वर्टेक्स आ जाएगी दैट विल बी 4. डेफिनेटली 3 मेरा नेक्स्ट आगे जाएगा, उसके बाद एंड में मेरे पास 4 आ जाएगा एंड आई विल हैव द कंप्लीट सीक्वेंसिंग 0 1 2 3 4. ठीक है बेटा. सो अगर कोई भी ट्री कोई भी आपका ट्री होगा, अगर मैं बात करती हूं ट्री की, तो इट विल ट्राइवर्स लेवल बाय लेवल. वो ऐसे करके फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा. This way it will having the traversing order. At every breath where it will start moving for that part. You're getting my point? So I hope you have the complete clarity of the BFS and how the BFS works. So one more example of the BFS is given here itself. In the tree structure shows the traversing of the tree using the BFS algorithm from the root node S to goal node K. BFS search algorithm from the root node S to the goal node K. BFS search algorithm traverse in the layer, so it will follow the path which will show by the dotted arrow. Definitely arrow के साथ है. अगर मैं इसकी बात करती हूँ, you can have the clarity. हम S से हम A पे जाएंगे. मैंने कहा पहले हम यहाँ से यहाँ पर गए, फिर हम यहाँ से यहाँ आए, फिर हमने यहाँ ट्राइवर्स करा, फिर हम यहाँ पर गए, फिर हमने यहाँ ट्राइवर्स करा और उसके बाद हम यहाँ आकर हमने यहाँ पर ट्राइवर्स करा. जो मैंने आपको प्राइवेट बताया वही चीज यहाँ मेंशन है. SABCDGHEFIK. सो यू कैन सी दैट इसी तरीके से फॉलो ऑन ये करेगा. गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर एनफ? टू आई होप बहुत आराम से आपको इजीली क्लियर हो जाएगा बेटा कि कैसे आपका BFS वर्क करता है. और मैं फिर वही कहूंगी, चाहे वो एक छोटा ग्राफ हो चाहे एक बड़ा ग्राफ हो, इट विल वर्क ओनली लेवल वाइज लेवल. ठीक है बेटा. So talking about the time complexity, of course, the BFS algorithm can obtained by the number of nodes traversed in BFS until the shallowest node. तब तक वो काम करता रहेगा. Where the D is the depth of the shallowest solution and B is the node at every state. That is a branch vector. B is a branch vector and D is the depth. तो definitely अगर मैं time complexity की बात करती हूँ, it will be goes on by 1 plus B square will be 3 till BD. जब तक कि आपका end आपके shallowest node तक हम नहीं पहुँचते हैं. Space complexity, of course, it is the BFS algorithm. It is given by the memory size. कितना आपका memory size है वो acquire कर रहा है, उसके according आपकी space complexity हम identify कर सकते हैं. Completeness, of course, BFS is complete, which means if the shallowest goal node is at some finite depth, then BFS will find a solution. Optimality की अगर हम बात करते हैं, BFS is optimal if path cost is a non-decreasing function of the depth of the node. Optimal मुझे कब हम कहेंगे? जब मुझे लगेगा कि मेरी cost है वो कम हो रही है. ऐसा नहीं कि मेरी cost बढ़ रही है तो मैं उसको optimal solution कहूंगी, नहीं.
कंप्लीट मेरी कब होगी? जब वो मुझे सॉल्यूशन देगी। ऑप्टिमल मेरी कब होगी? जब वो मुझे लेस कॉस्ट के साथ वो मुझे प्रोवाइड करेगी। Next is your uniform cost search. That is the second algorithm, second category of searching algorithm. And uniform cost search is also an informed search algorithm that uses the lowest cumulative cost to find the path from the source to the destination. वो कोशिश करते हैं कम कॉस्ट की वैल्यू को पिक करे और धीरे धीरे ट्राइवर्स करके वो गोल नोड तक पहुंच सके। ठीक है। नोड्स आर एक्सपैंडेड स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट अकॉर्डिंग टू द मिनिमम क्यूमुलेटिव कॉस्ट। वो एक्सपैंड करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट नोड अकॉर्डिंग टू द मिनिमम क्यूमुलेटिव कॉस्ट। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं अगर 0 लेवल पर हूं और मेरे पास 3 तरीके रास्ते हैं जाने के लिए आगे, तो जिसके पास भी कॉस्ट कम होगी मैं पहले उसी के पास जाऊंगी, उसके आगे मैं अपना ट्राइवर्सिंग का पाथ स्टार्ट करूंगी। ठीक है। द यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च इज देन इंप्लीमेंटेड यूजिंग अ प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू के हिसाब से, क्योंकि मैंने कहा जिसकी कॉस्ट कम होगी उसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी, उसके बिहाफ पर ही आई विल स्टार्ट माई ट्राइवर्सिंग। इट इज यूज्ड फॉर वेटेड ट्री एंड ग्राफ ट्राइवर्सल। और इसका एडवांटेज क्या है? डेफिनेटली क्योंकि हम कॉस्ट की बात करें, मुझे कम कॉस्ट पे मैं ट्राइवर्सिंग कर पा रही हूँ, तो इट विल प्रोवाइड यू द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एंड डिसएडवांटेज इज दैट कि कई बार क्या होता है, हम जब काम करते रहते हैं लो कॉस्ट के चक्कर में बार बार वो वापस वही का वही लूप में चला जाता है। मैं ट्राइवर्सिंग कर रही हूँ और जब मैंने ट्राइवर्सिंग करा तो मुझे पता चला मिनिमम कॉस्ट मेरा उसी में बार बार आ रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। तो कई बार क्या होता है, वो जो आपका ग्राफ है, जो आपका ट्री है, वो आपका इनफाइनाइट लूप में चला जाता है। तो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ अ यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। Now coming to the algorithm, of course, insert the root node in the priority queue. Repeat while the queue is not empty. Now remove the element with the highest priority. If the removed node is the destination, print total cost and stop the algorithm. Else, enqueue all the children of the current node of the priority queue with their cumulative cost from the root as your प्रायोरिटी। तो हम एक एक करके हम काम करेंगे। पहले हम रिमूव करेंगे नोड को इन द डेस्टिनेशन, हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे, हम स्टॉप करेंगे एल्गोरिथम को, और अगर वो नहीं है वहां पर डेफिनेटली विल डू द एनक्यूइंग ऑफ दोस चिल्ड्रन। सो वी कैन टेक अ स्मॉल एग्जांपल फॉर दैट, फॉर हैविंग द यूनिफॉर्म कॉस्ट। मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म कॉस्ट का सिंपल सा फंडा वो यही कहता है कि जहां पर भी आपको मिनिमम कॉस्ट मिलेगी मैं तो उसी तरफ ही जाऊंगा। ठीक है, तभी वो मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। सो दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग हियर एन एग्जांपल फॉर दैट। हम स्टार्ट करते हैं सोर्स नोड से, डेस्टिनेशन के पास मुझे यहां पर आना है। ठीक, डेफिनेटली फ्रॉम सोर्स नोड आई एम हैविंग 3 नोड्स इन विद दैट A, B and C, and you can see easily that we are having 3 cost values also, 1, 3 and 5. That is the elaboration of this graph, the B graph. सोर्स नोड है मेरे पास, A, B और C है, मेरे पास 3 कॉस्ट अवेलेबल है, 1, 3 एंड 5। ठीक है बेटा, अब मैं देखूंगी इसमें से मेरे पास मिनिमम कॉस्ट कौन सी है। डेफिनेटली इट इज इजीली शोइंग दैट कि मेरी मिनिमम कॉस्ट 1 की है। ठीक है, मेरे पास मिनिमम कॉस्ट 1 की है। अब मैं देखती हूँ जब मैं A के पास आती हूँ, A से आगे मेरे पास कौन कौन से रास्ते हैं और कौन सा मेरे पास मिनिमम कॉस्ट का ज्यादा इसके बाद मुझे मिलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ A पर आई, A के आगे मेरे पास एक ही रास्ता है जो मुझे G तक लेके जा रहा है, डेफिनेटली अगर मैं G तक पहुंचती हूं तो मेरी कॉस्ट फ्रॉम सोर्स नोड टू गोल नोड इज 1 + 3 विच इज योर 4। ठीक है बेटा, तो 1 + 3 इज द 4 वैल्यू डेफिनेटली। तो मेरा यहाँ पर मेंशन है 4, यानी सोर्स से मैं G तक पहुंच गई 4 पे, मेरा 3 और 5 वहीं का वहीं ऐसा है। अब हम G से आगे चलेंगे। G से आगे मेरे पास 2 कैटेगरीज हैं, H और I की, लेकिन नहीं, यहां पर मैं देखूंगी डेफिनेटली मेरे पास जब 3 कॉस्ट आई है 4, 3 और 5, इसमें मेरी मिनिमम कॉस्ट कौन सी है? मेरी मिनिमम कॉस्ट है 3 की, तो मैं 3 को फॉलो अप करूंगी। 3 के आई, 3 से मैंने देखा मेरे पास कहां पे रास्ता जा रहा है, मेरा रास्ता जा रहा है F के पास। डेफिनेटली मेरी जो वैल्यू हो जाएगी 3 + 4 दैट विल बी माय 7। तो डेफिनेटली मैं F पर पहुंच गई। ठीक है, इन तीनों को फिर से मैंने चेक करा कौन सी मेरी मिनिमम वैल्यू है, 4, 7, 5, मेरे पास 4 मिनिमम वैल्यू है। 4 से यानी कि G से आगे मेरे पास 2 रास्ते जा रहे हैं, H और I के, तो मैंने वही दोनों वैल्यूज फिर से लिख ली, H और I की वैल्यू, यानी कि मेरे पास 7 वैल्यू आ गई फ्रॉम G टू, फ्रॉम सोर्स टू द H, दैट इज टोटल वैल्यू विल बी 7। मेरे पास ये भी 7 है क्योंकि मेरी मिनिमम वैल्यू जो है ये भी मेरी 7 है, और ये मेरे पास जो आ गई आपकी डेफिनेटली क्योंकि मैंने मूव करा डेस्टिनेशन से, ये मेरी आ गई आपकी डेस्टिनेशन की वैल्यू। तो डेफिनेटली इस तरीके से जब हम मूवमेंट हम करते जाएंगे, सो आई कैन इजीली चेक दैट कि सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड तक मेरे पास जो रीचिंग का पॉइंट है वो मेरा आ रहा है 8। ठीक है बेटा, फॉर दिस पार्ट आई एम कंक्लूडिंग हियर इटसेल्फ। इन द नेक्स्ट लेक्चर सीरीज आई विल स्टार्ट विद the rest of the uninformed algorithms. Thank you so much.